हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी टेक ट्रैवल। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेफ्टी साइट सेफ्टी प्लान कैसे बनाता है, तो उसका पार्ट 1 हमने किया। तो यहाँ पार्ट 1 हम डिस्कस किया था जब तक टेबल कंटेंट तक हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था। टेबल कंटेंट, जो टेबल कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए हम एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम में, तो उसका डिटेल जाएंगे नेक्स्ट टाइम में। सो नेक्स्ट टेबल कंटेंट बी। सो सेक्शन बी में स्कोप, जॉब टाइटल एंड स्कोप, व्हाट इज project name, job title, what is the project name, and scope of work. Describe project scope of work, what is the आप लोग का काम क्या है, प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क काम पूरा लिखना है। 1 2 3 बुलेट पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं, बुलेट पॉइंट सही रहेगा इसमें। सी सेक्शन 2 बी हमने ABCD यूज़ किया। सेक्शन नंबर सी हम साइट लोकेशन मैप, अपने प्रोजेक्ट का लोकेशन मैप और गूगल मैप और ड्राइंग लोकेशन मैप ऐड कर सकते हैं। डी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी करंट पॉलिसी, कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्टर का पॉलिसी यहाँ पेश करना है, तो यहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। कॉपी फ़ोटो और स्क्रीनशॉट इधर डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकेंड चैप्टर है HS प्रोजेक्ट HSE ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ये सेक्शन में प्रोजेक्ट का HSE का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लिखना है। मतलब हम प्रोजेक्ट में सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी सुपरवाइजर, एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर, सेफ्टी ऑफिसर्स, इसका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ एक लेआउट जैसे सैम्पल्स में बना सकता है। तो नॉर्मली ऑल कंट्री में 50 पर्सनल 1 सेफ्टी ऑफिसर रहता है, उसके हिसाब से करना है। लेजेंड में थोड़ा डिटेल लिखा होगा, मतलब साइट स्टाफ मतलब ऑन साइट जो काम कर रहे साइट स्टाफ, ऑफ साइट स्टाफ मतलब रीजनल मैनेजर्स, कॉर्पोरेट मैनेजर्स, ये सभी आदमी लोग साइट में नहीं रहता है, ड्यूटी में, साइट ड्यूटी में नहीं रहता है, मतलब वो हेड ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में ऐसा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो ऑफ साइट। तो रिपोर्टिंग, इसको लाइन ऑफ रिपोर्टिंग, जो कौन सेफ्टी ऑफिसर किसको रिस्पॉन्सिबल है, सेफ्टी सुपरवाइजर को, सेफ्टी सुपरवाइजर किसको रिस्पॉन्सिबल, सेफ्टी मैनेजर को। तो एज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का लाइन चार्ट भी लिखना है, डायरेक्ट लाइन, स्ट्रेट ब्लैक लाइन। सेकंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अगर इन केस हम रिपोर्टिंग टू मैनेजर, सेफ्टी सुपरवाइजर इज रिपोर्टिंग टू द मैनेजर बट ही हैव अथॉरिटी टू कम्युनिकेट विद द एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेटर ऑल्सो। So there is a communication between safety supervisor and environmental supervisor. So for example, HSE manager was directly reporting, all reporting cases go through the project manager, but he have a authority to communicate with the regional manager for his own duties or for his reference. So he have authority to communication only. He don't have a reporting directly, communications. ओके, दीज आर फॉर एग्जाम्पल्स। मैनी कंपनीज, आप लोग का अलग अलग कंपनी में अलग अलग सिस्टम फॉलो कर रहा होगा, लेकिन जो फॉलो सिस्टम नहीं है इसको ऐसा एक सैम्पल रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। सेकंड, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जी सॉरी एफ में क्वालिफिकेशन एंड जैसे प्रोफेशनल। अब ये नेसेसरी है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर जो नेसेसरी नहीं है उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेसेसरी क्यों आराम को और ऐसा क्लाइंट के साथ में ये सबमिट करना पड़ता है, और दूसरे एरिया में नहीं चाहिए तो उसको निकाल सकते हैं, आपको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी मतलब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना प्रोजेक्ट में कितना जॉब प्रोफेशनल्स है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन्स, ये सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसे डिस्क्राइब करना चाहिए। ये प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई मैनेजर को दिया होता है, तो कंस्ट्रक्शन मैनेजर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर द कंसोर्शियम मैनेजर, मतलब कंस्ट्रक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, और कॉन्ट्रैक्टर्स मैनेजर इज अकाउंटेबल पर्सन फॉर ऑल जॉब्स, तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबल फॉर ऑल जॉब, तो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल पर्सन्स, सो दे आर द अकाउंटेबल पर्सन इन अ प्रोजेक्ट। एंड आपका कंपनी जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्पेसिफिक है इधर लिख सकता है, आपको इधर मेंशन कर सकता है। कंसोर्शियम मैनेजर, आपको कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, साइट मैनेजर जो भी है इधर, और लोग आपका कंपनी के हिसाब से इधर मेंशन कर सकता है। मेरे को थोड़ा जल्दी फास्ट जा रहे हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसके लिए साइट सुपरवाइजर के लिए क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिखना है, फॉलो द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ऐसा रिक्वायरमेंट्स के लिए मेंशन कर सकते हैं। HSE मैनेजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कंपनी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी HSE मैनेजर के लिए है वही लिखना है इधर। HSE मैनेजर नॉर्मली द हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स
Contractual requirements, guidance to the concession team, record the meeting, record safety meeting, including person training records, maintain the regular level of project client meetings, local authorities meetings, maintain, develop a safe working procedure and for the site specific procedures, report and investigate all incident and accidents, near misses cases, and keep and maintain records with the client and company स्टैंडर्ड्स. सो आपका कंपनी जो स्टैंडर्ड फॉलो करे इधर मेंशन कर सकता है, प्लस आपको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना चाहिए. तो उसका किसी मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. रिव्यू द जॉब सेफ्टी एनालिसिस का असेसमेंट्स, जैसा आपका कंपनी में हर कंपनी में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसके हिसाब से चेंज कर सकते. सेफ्टी सुपरवाइज़र को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है. Understand and health and safety requirements and client requirements, provide a guidance and assistance to safety officers, and implement contractual requirements, and communicate with its site HSE manager, etc. Safety officer क्या responsibility, fully understand the safety requirements, assist the HSE manager supervisor in daily operations, daily inspect the site and observe the unsafe condition and report, and implement the contractual requirements, HSE programs, conduct the toolbox meeting, safety toolbox meetings, engineer responsibilities, conduct daily site inspections, assist the safety training personnel, ensure the safe health and safety consideration, issuing day-to-day work permits and implementation of site, so etc. So medical technicians, on site there will be a site nurse, site doctors, so there will be a responsibility of doctors and nurse also. There should be client requirement should be for maintain the site, document clinic record, treatment records, first aid records, incident records, so copy of incident records, so minimum medical stock and medical equipment list, inspections, they are the responsibility of supervisor, foreman, they should be responsible for these sections. General staff, in case you have any contractor, subcontractor, any general staffs, leadmans, craft personnel, carpenter, electrical, mechanics, we can add here. So next chapter, job specific training. Job specific training, in case you have your company is providing job specific training, riggers, operators, that kind of electrical, mechanical, that kind of job specific training you are doing, that training you can conduct there. Safety training program, what are the purpose, you should be mentioning why they are giving safety training for here, and responsibility for each section, site safety supervisors, induction training programs, safety orientation, etc. And records, so what are the safety training we are conducting and which is responsible, in-house training or third-party training related topic you can mention, related subject you can mention here, how you are going to manage the training section, so you can describe in the training program. You crafts competency program, that means carpenters, electricals, that kind of personnel are recruiting to the site, they can use craft training. So job requires Saudi Aramco approved requirements. So there is approved requirements. So if your client are requiring certain requirements or your companies are requiring certain requirements for the riggers, this kind of certification should be valid. So the third party certification, whatever it is, you can mention here, and validity of the period you can mention here. Subcontractor, if you are at the beginning of the project, your subcontractors already is finalized, you can mention here. If subcontractor is not finalized, you can mention to be submitted later. If it is already finalized, you can mention here what kind of work will be do that subcontractors and what are the activities, and subcontractor code numbers or BI numbers or contact numbers, and what is the subcontractor name, name of the contractual project manager or contractual manager, locations, mobile number, email ID, you can mention certain requirements. If it is privacy, you can mention the company name and locations, that's only. So each item, scaffolding jobs, rental equipments, storage tank constructions,
etc. HVAC system. Whether there is any other companies, you can mention here. Only the subcontractor section. So subcontractor management program. If it is required, you want to manage the subcontractors. There are certain guidelines for subcontractor you can add here. If the same procedure you are following for the subcontractor also, it is not required. You can remove this section. If you want to add additional control measures, additional documents to control the subcontractor, you can mention here, including the non-compliance. So procedure for behavior observations. So behavior observation and safe act, that kind of observations, बिहेवियरल बेस्ड ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे इसको हैंडल करना चाहता है. तो बहुत कंपनी का अलग अलग टेक्निक रहेगा. उसका एक फॉर्म मॉडिफाई करना पड़ेगा, बिहेवियर बेस्ड ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स. सो उसका ट्रैकिंग लिस्ट, ऑब्जर्वेशन लिस्ट आउट करना है. बिहेवियर बेस्ड ऑब्जर्वेशन फॉर्म में अपने साइट में जनरल एक ऑब्जर्वेशन फॉर्म लगा होगा. किसी को रिपोर्ट करना है, वो साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करना है, किसी को भी, इवन वर्कर, साइट मैनेजर, एम्प्लॉय मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन, एनीबडी कैन राइट दिस फॉर्म. This is called behavior observation form, or you can call site observation form, and anybody can write this and you can put in the box. In it there will be a tracking record and concerned department, it will be investigated. Site safety inspections. So site safety inspection, how you are going to monitoring the site safety inspection in that particular project. That means the safety officer inspection, weekly site inspections by the daily by the safety officer, joint walkthrough, etc. You can mention here in this section. Safety meetings, and what kind of safety meetings you are arranging at sites, and how many meetings, and what is the period of the safety meetings, and what are the records you are documenting after these safety meetings. And section number ends the injury and near miss reporting and investigations. So in your particular project, how you are going to investigate the incident and reporting system, what is the form you are using to report, and what is the tracking record, and how you are going to investigate this incident, and what is the reporting time, what is 24 hours, 42 hours, near miss, fatality, LTI, what are the reporting hours, you can include these sections. So, what is the investigation, what are the point you need to be not in the investigation sections, you can give as a guidance. Medical reports. So in the medical section, in the medical report for the first aid case, near medical treatment cases, there will be, once the person injury happens, he got an injury, he need to report to the clinic, and from the clinic they will make the medical report. So the one form you need to develop to record that kind of treatment records. So if it is first aid or medical treatment cases, it need to be recorded here. This is the one set of sample. There will be different kind of form you can use. Action tracking and recording form sample. That means in our company we are using site inspection form, and which safety officer, safety professionals, during every day there will be a site inspection. He will write in that inspection form, and he will communicate to the supervisor, and he will get agreed time signature. Once he get in the office, and it will be tracked by the safety manager, and it will be go to the tracking record. How many observations raised today? How many observations closed? How many observation is open? It will be go to one tracking Excel tracking register. So that is called action tracking and recordings. So that open observation he can monitor next day. You can make Excel printout, and next day he can follow up with that observations. So if there is any miscellaneous training sections, आपको इधर mention कर सकता है. Any site incentive program, disciplinary actions. So in case a good perform the positive observations and a good performing employee for the employees, so how you are going to promote these employees? We will give award system, cash money, reward systems, that kind of certificates, that kind of issue, that kind of motivation program you can mention here. And disciplinary action. What are the disciplinary action? If there is any violator in the site, so there will be first warning, second warning, the warning letter, termination, removal from the site, dismissal from the company. What are the project related disciplinary action you want to implement that project, you can mention this section. So there will be award nomination program, so that specific professionals, they can nominate this
the personnel to the for award. So his continuous contribution for positive achievements or positive activities you can address to the site management. Reciprocal reaction, as we discussed in earlier. Hazard identifications, waste management plans. There is a separate submission of waste management plan, but in short they can mention there how you are going to manage the waste segregation, waste disposal, and what is the criteria for disposal and storage, where you will store, what is the requirements in your company, you can mention this area. Hazardous substances plans. So in hazardous materials like diesel, paint, chemicals you are bringing to the site locations, what is the requirements, what is your control measures to storage and usage, handling and issuing. So what is your procedure in the site, you need to mention here. Identification and labelings, etc. Job specific procedures, that means it is a big chapter, depend upon your construction site. आप लोग का कंस्ट्रक्शन साइट के हिसाब से लोकेशन स्पेसिफिक प्रोसीजर, जॉब और लोकेशन स्पेसिफिक प्रोसीजर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मतलब स्कैफोल्डिंग एंड लैडर्स जॉब्स. स्कैफोल्डिंग कोर्स, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट्स and what is the rules and regulations, what is the procedures you need to follow in the construction, what is the competency of the peoples, what type of scaffolding, whatever it is, fall protection you are going to perform, access and color coding of the tags, inspection, etc. The ladders, using requirements, that kind of things. For example, next one, confined space entry, what is the permitter system using, what are the limitations, where you need to apply the confined space permits and requirements. Marine work operations, so you can mention what are marine work operations, this required any permits, JSA risk assessment you can apply there. Excavation and trenching, how you are going to manage the trenching and excavation, what type of excavation you will do, how you are going to issue the permitter system, gas testing or underground utilities, how you are going to identify the underground utilities, site protections, what kind of technique used to site protection, access, inspection of excavations. So if you are using inspection of excavation checklist you can mention here, etc. So there are so many kind of work permit system. There are what kind of work permit system you want to implement this project. If there is a client system you can include it here in this section. How to work, cold work, confined space, etc. So there's each specific location, welding, hand tools, personal protective equipments. PPE section, you can what kind of PPEs you are implementing the site, how you're going to issue, how you record, how you're going to disposal, how you're going to changes, this kind of things you can mention. This second, fall prevention, electrical equipment, heat stress management, first aid and welfare, fire prevention, dust control, diving and demobilization plan. This kind of things, these are the safety plan content in the project before submitting the client. So हम बहुत आदमी लोग को सेफ्टी प्लान का एक आइडिया मिला होगा, तो बहुत आदमी लोग इसमें यहाँ से इधर से लेके कॉपी पेस्ट करते हैं. हम डिटेल इसको तरह कोई भी चेक नहीं करता है. तो इसको डिटेल जिसको जानता होगा ओके, जिसको जानता नहीं है ये डिटेल रेफरेंस के लिए यूज़फुल हो जाएगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद है, किसको यूज़फुल लग रहा है, दोस्त लोग को भी शेयर कर लेना, तो एक सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक द बेल आइकन and thank you for subscribing. See you with the next video and next topic. If you want to add any other topic, please put in the comment sections. We will add that topic.